ओके जी, स्क्रीन नजर आ रही है सबको मेरी? जी सर। The paper in front of me is Mathematics Syllabus D, Paper 1, 402412 variant October-November 2021. You will be allowed to use 2 hours. So आप देखें, जैसे ही आपने PDF फाइल अपने आईपैड पे खोली है तो आपको वहां पे ऊपर एक ये वाला बटन नजर आ रहा है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे आपके सामने बार खुल जाता है। अब ये मेरे एप्पल में ऐसा होता है, मुझे नहीं पता कि वहां पे डायरेक्ट पेन बना होता है, ड्रॉ वाला ऑप्शन होता है। मुझे यहाँ पे मार्कअप पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने मार्कअप पे क्लिक किया तो ये मेरे लिए पेपर एडिटेड फॉर्म में आ गया है। इज दिस क्लियर? यस सर, हो गया बस। हो क्या? ओके, दैट्स वेरी गुड। ओके, चलें जी। अब आपको सबको नजर आ रहा है? स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग। ओके, हाँ जी। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेरा पेपर नजर आ रहा है ना? लैपटॉप तो नजर नहीं आ रहा ना? जी सर। ओके, सो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू कैन हियर मी। ठीक है, सब मुझे सुन सकते हैं। रमशा, कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर? हु टेल नूर टू जॉइन? ओके, नूर इज हियर। ओके ओके, थैंक्स। ओके ओके, नूर इज हियर। ओके, Bismillahirrahmanirrahim. As calculators are not allowed in this paper, so let me just start with the question. Okay, now they said evaluate square root of 4900, but we know that 7 square is 49. Okay, so now there are two zeros, it means that it is 70 square. Okay, can I write this? यस सर। So it means that it is 49 square. That is the reason मैं आपको कहता हूँ कि आप लोग अपना कैलकुलेटर जो है ना, कैलकुलेटर के बगैर भी स्क्वायर्स को याद करें। ठीक है, अगर ये आपको फिर भी रहा है तो आपने करना कैसे है, आपने इसको लाइक दैट, इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए आपने करना है। तो पेपर में छोटा छोटा लिखना पड़ता है क्योंकि जगह कम होती है। 4900, वी नो दैट 49 is in table 7, so 7 sevens are 49, so that would be 700. Now that would be 7. 7 ones are 7, 2 zeros. Now it's 100 now. So I can use table 10 now. 10 tens are 100 and 10 ones are 10. So square root 4900, it is equals to square root of 7 times 7 times 10 times 10. So square root 7 square multiplied with 10 square. Separate them. 7 square square root 10 square. Cancel them. So you will get the full credit from the examiner. Okay. So you will get the full credit from the examiner. Okay. No need to show the working. So this working is just for you, like if you don't understand how to do it. Okay. Now moving forward, it says 5 cube. 5 cube means that 5 times 5 times 5. I always recommend students to please use rough working in the exam because you will avoid mistakes. So 5 times 5 is 25. 25 times 5 is 25. 5 times 5 is 25. 2 goes up. 5 times 2 is 10. 10 times 2 is 10 plus 2 is 125. That would be 125 is the final answer. Is this clear, everybody? Okay. Now they say workout. Workout mean calculate. Okay. So look at the question. We have to follow the BODMAS. Okay. So multiplication comes first. We can see that it's bracket, division, multiplication, addition, and subtraction. There is no bracket. There is a bracket, but there is a division. There is no division. Then there is a multiplication. So after multiplication, we have a bracket. So it means that we have to multiply 7 with negative 5 first. So 7 multiplied with negative 5 would be plus minus is minus because 7 has plus sign. 7 5s are 35. So minus minus plus sign of the greater value. 35 plus 8 is minus 43. Is this clear, everybody? यस सर। Is this clear, everybody? Okay. Shade one more small triangle so that the shape has a rotational symmetry of order 3. Okay. Like for example, if you are rotating the shape, like for example, this is the shape right in front of you, and if you are rotating the shape in 360-degree, now it's a 180, and let me complete the 360 rotation. Okay, that's 360 rotation now. Okay, so you want to rotate this shape in this manner so that this shape fits 3 times in a row.
okay, on exact position, right? So what how it will happen, we can see that this shape has some triangles in it, and we are allowed to shade one more triangle. And we can see that if I give them a number, so 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, I can see that in this side 2 and 3 is shaded, in this side 2 and 3 is shaded, but on this side only 3 is shaded. So can I shade triangle number 2? Can I shade triangle number 2 like that, so that it has rotational symmetry of order 3? Yes, everybody. सर इसकी समझ नहीं आई. देखें जैसे फॉर एग्जांपल ना, फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंटर पॉइंट, फॉर एग्जांपल, ओके, यस और नो? Yes, sir. फॉर एग्जांपल ये सेंटर पॉइंट है, और रमशा मैं इस ट्रायंगल को ना क्लॉकवाइज यहाँ से रोटेट करूंगा, ठीक है रमशा? जी. तो जैसे ही मैंने रोटेट किया तो ये टॉप कॉर्नर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा. इज दिस क्लियर? Yes. तो ऑटोमेटिकली ये वाला कॉर्नर आपका यहाँ पे जाएगा ना, यस और नो? सो automatically this corner will go there. Agree? Yes. So this is what a rotational symmetry is. Is this clear? Yes, sir. ये आगे जाके हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे भी. ये ऑनलाइन वालों ने ये चीजें पढ़ी हुई हैं, तो इनको ये समझ आ रही होगी. नूर, डू यू गेट दिस? बरीरा, बरीरा, नूर. Yes, sir. Okay, so we are done with this. Look at the question number 3. Write down the name of the solid form from each net. This box is open. For example, I say this is my iPad box. Okay, and we know that the box is in the shape of cuboid. So yes, it's a open form of a cuboid. Agree, everybody? जी सर. Okay. Look at this shape. It is something like a pyramid. Yes or no? Yes or no? This shape is pyramid. This shape is pyramid, and we can see that this is a square based pyramid. Square based pyramid. Right, everybody? This one is different. This one is different as well. This one is different. Yeah, three different rectangles, and these two are same. Okay, तो कौन सी दो चीजें सेम नजर आ रही हैं आपको? ट्रायंगल नजर आ रही है? So it's a triangular prism. Triangular prism. Sir, do we have to write square-based pyramid or can we just write pyramid? Now if you write a pyramid, so pyramid can be a rectangular pyramid, pyramid can be a triangular pyramid. Agree? Oh, okay. Because I can draw a triangular pyramid as well. Like for example, that is the point. So let me just show you. It's a triangular pyramid. Agree? I can also draw a rectangular pyramid like that. Can you see that? Yes. So we have to show the base, that the base is which base, right? This is triangular pyramid. Triangular pyramid. And this one is rectangular pyramid. Okay. Okay. So this one is triangular prism because there are two triangles which are same. So that is the reason this is what? This is a triangular prism. Okay, everybody? Okay, everybody. Now look at this. Now they say that A, B, C, D, and E, F, G, H are parallel lines. Okay, that's for sure. Good job. Okay, according to the question, we can see that the lines are parallel. So we must know a few things before proceeding to the question, that angle at a parallel line, it is equals to 180 degree. Okay, and these two angles are alternate. This is a revision. These two angles are corresponding angles. These are what? Corresponding angles. Okay.
These two angles are vertically opposite. Agree, everybody? Vertically opposite angles. So this is the revision of this chapter. And one more angle we have, like for example, two lines are parallel. So we know this, Ramsha, that if this is A and that is B, so A plus B must be equals to 180-degree angle. Okay, is this clear? Yes. So this is the revision of this chapter, and we'll study this chapter in detail. And this is just for the sake of a quick basic for all of you. Okay, so you can see that it's 53. So I can say that, Ramsha, that this given angle would be 180 minus 53. Agree? So 180 minus 153. Can you see my screen? Yeah, I can see it. Agree? If this is 46, so that is 180 minus 46. So 180 minus 46 would be 180 minus 46 would be 34. मुर्तजा समझ आ रही है बेटा? जी जी सर समझ आ रही है. Okay, we can see that Ramsha, that and Noor, can you see that B to C, B to G is a line? Agree? It's 53 as well. Agree? So I can also write here that if this is 53, so that would be 127, and that would be 134. 134. That would be 134. Okay. Is this clear, everybody? Is this clear, everybody? Yes, Yes sir. sir. Okay, now let's read the question. Now, according to the examiner, it says that find CXG. So let me just pick the CXG angle. So CX and G. So CX and G is this angle. This one examiner Sir, want to 180 find. minus 81. Very good, Zabardast. Good job. So we were requested to find out this angle. So that means that 180 minus 81. 180 minus 81 is 99 degrees. Is this clear, everybody? So moving forward, BCX. So BC and X. We saw this already, 53. Can you see that? All of you? B to C and that X. So we can see that it's 53. Can you see that, everybody? Yes sir. Okay, it's 99 degrees and it is 53 degrees. One mark है तो कोई मसला नहीं. ABX. So A, B and X. We can see that. What is ABX? Hoor? ABX. Angle A to B and then to X. So this angle is 134. Agree, everybody? This angle is 134 degree. We can see that already. Okay. So workout 69 divided by 0.3. So workout means you have to find out the value. बेटा आप सबको मेरी आवाज और स्क्रीन नजर आ रही है? Yes sir. So okay, it's 69 divided by 0.3. So I want to remove the decimal. It would be 3 by 10. Is this clear, Ramsha? Is this easy?
Yes. So 69 multiplied by 10 by 3. Agree? Agree? Because division को multiplication में change करते हैं तो we flip. So 3 ones are 3 and 3 twos are 6 and 3 threes are 9. So 23 times 10. So the answer is 230. That the answer is 230. Now it says workout. 7 ones are 7. Now we have to multiply these two. इन दोनों को multiply करें. Whatever the answer is, add it with the 4. So just write 7 ऐसे 7 लिख लें. Okay. 7 ones are 7. एक मिनट जरा मुझे तो मैं इसको साफ करूं इसको. Numerator को decide करने के लिए look at that. 7 times 1 is 7 and plus 4 is 11. So it would be 11 divided by 7. Is this clear everybody? And we have to give the answer in mixed number. So पहले जरा solve तो करें. So 11 by 7 times 5 by 3. So it would be 55 divided by 7 threes are 21. Is this clear, Ramsha? Yes. सर मिक्स Okay, फ्रैक्शन में Ramsha, we know. सर Okay, mixed fraction अब मैं देखे बना रहा हूँ ना. We know that there are 3 circles. Agree? Okay. G. The denominator remains the same, so it would be 21. Okay. Now 21 times 1 is 21. 21 times 2 is 42. And 21 times 3 is what? It is 63. So we have to pick 42. So 21 times 2 is 42. 42 plus what is 42 plus what is 55? So x is equal to 55 minus 42. X is equal to 13. So 13 is that number. Is this clear, everybody? यस सर Okay. So that's the answer. Okay. Now by writing each number correct to one significant number, estimate the value of. Okay. First of all, shade the first significant number. Okay. Now it's time. So 8 is my first oh, wait a minute. Let me just decrease some opacity here. Okay, so 8 is my first significant number. Okay, in 0.64, 0 is not a significant number when it is on the left of a non-zero. So now 6 is my first significant and this is 1. Okay, so now it's time to revise some rounding. So we know this already that after 8 there is a 2. So which is less than 5. So 8,230, it is nearer to 8,000. Okay, 0.6 after 0.6 after 6 there is a 4 which is less than 5. No need to add anything in that, so that would be 0.6. 1 and 8, 18 is near to 20, not 10. So now this is a round off data and you will get 1 mark for these 3 numbers. Okay, okay, once you're done with this, I know that 0. I'm going to do something with 0.6 because 0.6 is equals to 6 by 10. Agree, everybody? Yes or no? यस सर Ramsha? Yes. Noor? Yes, sir. Okay, now 6 by 10. I'm inserting this 6 by 10 into this fraction. How? I will multiply 6 in the numerator and 10 in the denominator. Is this clear? That's the shortcut. Okay. Now cancel the zeros. 0, 0, 0. Okay. Now we have the question like that 80 times 6 divided by 2. Okay, that's good. So now we can cancel 2 ones are 2 and 2 threes are 6 as well. Agree? Now 80 times 3 is only left. So 8 threes are 24 and there is a 0. So 240. Is this clear, everybody? सर आई डिड इट बाय डिफरेंट मेथड मैंने 8000 को 0.6 से मल्टीप्लाई किया फिर उससे 20 से डिवाइड किया बेटा आपको कैलकुलेटर नहीं अलाउड तो ये भी याद रखना है ना. नहीं तो सर ये मैंने जो मैंने वो आपने जो मेथड सिखाई थी डेसिमल मल्टीप्लिकेशन की उसी से मैंने की है हाँ अच्छी बात है. ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दैट. ठीक है, जी सर हर बच्चे की अपनी वैल्यू होती है. तो ये एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ हमने एस्टिमेट किया गया दैट द आंसर इज 240. ओके, टिल वन सिग्निफिकेंट नंबर. ओके. Okay, now 0.06 in kilometer is a meter. Okay, so 1 kilometer is equals to 1000 meters. Agree? That's the scale. पहले scale लिखना जरूरी है. Question में scale लिखिएगा, फिर लिखें 0.06 is equals to x. हमें नहीं पता ये कितने हैं, तो पहले ये करूंगा कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा. I'll do cross multiplication because I need to find out x. So x multiplied by 1 is x and 0.06 multiplied by 1000
अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मुझे अभी ये थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है कि किसके बराबर होगा। हमें नजर आ रहा है कि देयर आर 3 zeros एंड द पॉइंट विल मूव टुवर्ड्स राइट, पॉइंट राइट को मूव करेगा। तो पहले 0.06 लिख लें, पॉइंट्स को दें 3 जंप्स, 1 2 3। ओके, पॉइंट यहाँ पर आ चुका है, तो इट मींस दैट द आंसर इज 60 meters। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Okay, that's good. Okay, now they say that convert 7 meter square to centimeter। अब मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्केल ही हमें नहीं आते तो हम लोग करें क्या? लेकिन हमने बचपन से ये चीज तो पढ़ रहे हैं ना कि दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों स्केल्स में यहाँ पे लिख देता हूँ मीटर किलोमीटर वाले। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। फिर 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर, राइट नूर? Yes, sir. Now we are requested to convert 7 meter square. So let's find 1 meter square first. So taking square on both sides, that would be 1 meter square is equals to 10,000 centimeter square, because 100 square is 100 multiplied by 100 is 10,000. Okay, now it's 7 meter square is equals to dash centimeter square. So that would be x, cross multiply please. So 1 multiplied by x is x. So that would be x is equals to 7 multiplied with 10,000. Okay, so 70,000 is the answer. Is this clear everybody? Is this clear, all of you? Yes, sir. Any questions so far? Noor, Hoor, Barira? Any questions? Sir. Okay, now write 216 as a product of its prime factors. तो prime factorization करनी है, prime number के अलावा कोई number इस्तेमाल नहीं करना, तो 216 start with 2, so it would be 108 half. Now I can use table 2 again, 54. I can use table 2 1 again, it would be 27. Now 3 9 3 3 3 1. Look at these all numbers are prime, yes or no? And this is what a prime factors is. So 216 as a product of its prime factors, so it would be 2 times 2 times 2 times 3 times 3 times 3. We know that 216 is equals to 2q times 3q. This is your final answer. Is this clear? Is this clear? Yeah, yes, sir. Okay, now they say that look at the question number part B. Two positive integers are each greater than 25. Okay, no, that is the star point, that these two positive integers, they are each greater than 25. Their LCM is 216 and their HCF is 18. Okay, their HCF is 18. So if their highest common factor is 18, so it means that these two numbers, it means that these two numbers are multiples of 18, क्योंकि 18 के टेबल में आ रहे हैं ना, agree everybody? And after 18, the second multiple of 18 is 36, the third one is 54, and the fourth one is 72, right? Yes or no? Yes, sir. So it means that we have to check these 2 to 3 numbers all together, so that, and we need two integers, so we have to take a combination of two integers so that we can get HCF of 18 and LCM of 216 of these two numbers. So let's find out. Let me pick the greater ones, 54 and 72. So it is 54 and 72. Let's check whether we get 216 as an LCM and 18 as a HCF or not. So 2 27, and that would be 36 if I'm not wrong. Okay, so now we have to use table 3. So table 3 is 9, and that would be 1 and 2 12. Again table 3, 3 twos are 3 threes are 9 and 3 fours are 12. Now the table change. Agree, Ramsha? Yes. Ramsha, agree? Okay, we are finding those two numbers. Okay, table change, so stop. Okay, now check. We need HCF equals 18. Let's check whether we have 18 or not. 2 times 2, 2 times 3,
2 times 3 times 3. 2 3s are 6, 6 3s are 18. Yes, we have HCF as an 18. We satisfied this. Okay. Now we need LCM as 216. So LCM is equals to, we know that we have to multiply till first till last. Agree? So 2 3s are 6, 6 3s are 18. 18 into 3 is 18 into 3 is what? 54. And 54 times 4 is 216. Yes, we got it. Now we got the two numbers whose LCM is 216 and HCF is 18. So the two numbers are 54 and 72. सर हमने 36 क्यों नहीं लिया HCF में? बेटा हमने आप 36 भी ले सकते थे। मैंने ऐसा किया कि मैंने थोड़े से बड़े नंबर उठाए क्योंकि एलसीएम मुझे बड़ा बड़ा नजर आ रहा था। समझ आइए? जी सर। एलसीएम मुझे 216 नजर आ रहा है ना, तो इसलिए मैंने बड़े दो नंबर उठा लिए। ठीक है, आप कोई भी दो उठा सकते हो। ठीक है, ओके सर। खाली एक हिंट मिल गई थी हमें कि एचसीएफ जो है 18 है ना, तो जब 18 एचसीएफ है तो इसका मतलब है 18 के तमाम एलसीएम हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं मल्टीपल्स। तो मैंने 18 के मल्टीपल्स 3 उठाए थे और बड़े वाले दो मैंने उठा लिए। ठीक है, ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है तो प्लीज फोकस। डिस्क्राइब फुली स्ट्रिंगल्स ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स A onto B. We can see that A is slided onto B, so it's a translation. Okay, Barira, and what is the vector? A is going on to B. Okay, keep this fact alive. Barira, beta, what is the vector? Can you hear me? Yes, sir. Okay, what is the vector, please? A onto B. Start your car from A and go towards B. You can either take left, right, up, and down. 2 down and 1, 2. 4 right, 4 right. So see, you have to take 4 towards right. It is plus 4, and that is minus 2. So 4 right and 2 down. So ऊपर x लिखा करें, नीचे y लिखा करें. Okay, it is x movement and this is y movement. Agree? Okay, so अब हम लोग ग्रिड से ये मिटा देते हैं, हमें इनकी जरूरत नहीं है. Okay, moving forward, triangle A is mapped onto triangle C. Triangle A is mapped onto triangle C by rotation 90 degree anti-clockwise. Center is 0 0. So जरा पहले तो सेंटर के साथ जरा इसको ज्वाइन कर लें. ठीक है, ओके 90 डिग्रीज की मूवमेंट का मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जांपल ये 90 डिग्री पे रोटेट होगा तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल व्हेन 90 डिग्री पे रोटेट होगा तो वर्टिकल हो जाएगा. एग्री? यस और नो? सो लेट मी ड्रॉ द 90 डिग्री एंगल फर्स्ट. पहले 90 डिग्री एंगल बना लेते हैं और वी हैव टू गो एंटी क्लॉकवाइज. तो हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है. सो वी हैव टू डू दिस वे. फॉर एग्जांपल बरीरा, क्या ये 90 का एंगल मैं ठीक लगा रहा हूँ? और दिस वन इज राइट. Is this right now? Yes, sir. Okay, it's 90 degree angle. We can see that 90 degree का एंगल हमें पता है, बच्चों को भी पता होता है कि 90 डिग्री का एंगल कुछ ऐसा होता है. ठीक है, दो स्ट्रेट लाइंस होती हैं. ठीक है, okay, we can see that already. Okay, now this line is at this point is at this position, so this point will go there. अभी यहाँ पे straight है line, तो ये हो जाएगा horizontal and this will go there and that point is like that. So इसको shade कर दें थोड़ा सा. So this is 90 degrees rotated anti-clockwise from the center 0 0. Is this clear, everybody? Noor and Hoor? Triangle A is mapped onto triangle D by an enlargement scale factor is 3, matlab triple ho gaya, and the center is 5 minus 5. So center is 5 minus 5, x is 5 and y is minus 5. So this is the point. Okay, start your car from the center and go till A. So I can erase these points now because I need only that triangle. So let's check. Start your car 3 towards up and 2 towards left. So the vector is minus 2 and 3.
Now the scale factor is triple, so it would be -6 and 9. So let's go now. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 9 up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So this is the point. We have two blocks here, so triple would be 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. We have one block here, so it will be 3. So that is the point. Now we got our triangle, which is enlarged with a scale factor 3 and the center 5 minus 5. नूर हूर बरीरा बेटा आप लोगों को समझ आ गई To check the accuracy you have to connect the corresponding points. Look at that, all the corresponding points are passing from the center. Can you see that? Center which was given to us. Can you see that? Noor, better this question is guaranteed in the exam. Okay, ये question paper में for sure होता है. Noor, can you hear me? मुर्तजा समझ आई है? नहीं सर, कुछ खास नहीं। खैर है, बस ये आप लोग खाली देख लो तो इतना भी काफी है, मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ाऊंगा. जी जी सर। ओके, लोकी हम लोगों ने करना है तो लोकी को छोड़ देते हैं. सो अभी ये देखें जी जरा, द डायग्राम शोज अ रेक्टेंगल ABCD and E is the point on the rectangle. Said that DEC is 90. Okay, 90, so it means that this is also 90. Okay, prove that triangle ADC, AD and C, ADC is the triangle A to D. Wait a minute, let me just share it. We have to prove that ADC okay, ADC is similar to DEC. It is similar to D, E, and C. Okay. So for similarity, we should know that what similar thing is. So similar figures, revision, similar figures have same angles, same angles, and equal corresponding side ratios. Okay, I can see that in a triangle ADC, in triangle ADC, angle D is 90. Can you see that, everybody? And in triangle DEC, angle E is 90 degree. Agree, everybody? Angle C is common angle of these two triangles. Yes or no? बेटा आवाज आ रही है सबको मेरी? यस सर। देख लें जरा, सब देख लें. बरीरा, नूर, हूर, नूर एंड हूर, बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं कितनी देर से नाम ले रहा हूं आप लोगों का. हूर, हूर. यस, नूर को भी बेटा कहो कि ज्वाइन करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. शाबा. ओके, आई कैन सी दैट एंगल E is 90. आपको एंगल E भी 90 नजर आ रहा है रमशा? नजर आ रहा है बेटा? और एंगल D जी भी 90 नजर आ रहा है. अब आपको नजर आ रहा है कि एंगल C जो है ये दोनों ट्राइंगल्स का हिस्सा है. यस और नो? सो यस ऑटोमेटिकली ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, बिकॉज 180 माइनस 90 माइनस C जो होगा दैट वुड बी द सेम इन बोथ द ट्राइंगल्स. यस और नो? सो angle A and angle D will be automatically same. So angle postulate means what? Three angles are same. So
triangles are similar. तीनों एंगल सेम है, तो ट्राइंगल क्या है आपस में, सिमिलर है. इज दिस क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात में देखें. फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल मैंने आपके सामने ये बनाया और एक ये बनाया. ये दोनों ट्राइंगल जो हैं ये खाली साइज में छोटे बड़े हैं. एंड दीज टू आर सिमिलर. दीज टू आर व्हाट? दे आर व्हाट? सिमिलर. ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. यही चीज हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे थे. हमने देख लिया. जरा मैं रिपीट कर रहा हूँ. प्लीज पे अटेंशन ऑल ऑफ यू, स्पेशली नूर एंड हूर एंड बरीरा, क्योंकि एक चीज आपने पढ़ी हुई है. Let me mark these two. Now marking angle. Now I was just proving that triangle ADC is similar to triangle DEC. So you can see triangle DEC आपको नजर आ रहा है, आपको ADC नजर आ रहा है, दोनों ट्राइंगल नजर आ रहे हैं आपको. ठीक है, look at that. We can see that angle E is 90. Can you see that? But angle D is also 90. So it means that this is one angle. Agree? Second angle is angle C is the common angle of these two triangles. Agree or not? Yes or no? Yes? Okay, well done. That angle C is the common angle of these two triangles. Okay, now look at that. So automatically this angle and this angle would be same, because 180 minus 90 minus angle C would be the same green angles. Agree or not? So when all the angles are equal, so triangles are similar. तो मैंने नीचे डिटेल में लिखा triangles are similar. Is this clear? Sir, can you explain the last point? Last one मतलब Sir, ये देखें explain. आपको. ओके, ये देखें, मेरी बात सुने बरीरा. मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रहा हूँ. ठीक है, फॉर एग्जांपल समझने के लिए कुछ वैल्यूज दे रहा हूँ. ये 90 है. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस ब्लू वन इज 50. एग्री? एग्री? Yes, sir. So it means that this green one is 40. Agree? Yes. Now you forget about this for these two. Now look at this. We have this angle as 90 as well. ये 90 है हमारे पास, ये 50 है, तो क्या ये ऑटोमेटिकली ये भी 40 है कि नहीं? समझ आ गई? That this 50 is the common angle of both the triangles. दोनों ट्राइंगल का कॉमन एंगल है ये. एग्री और नॉट? क्योंकि ये छोटा ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल के ऊपर पड़ा हुआ है. समझ आई आपको? जी सर. नहीं आई तो दोबारा पूछो. सर आ गई है. चलो, गुड जॉब. अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ. अच्छा, जो चीज़ मैंने इसमें छोड़नी है वो मैं छोड़ता हूँ. ज़रा प्लीज़ एक मिनट ज़रा छोड़ दें मुझे कि मैं ये लगा दूँ ताकि नोट्स में आप लोगों के पास रहे. ये हो गया. रेड से मैं कर देता हूँ, ये 90 है तो ये भी 90 है. ठीक है, चलें जी, ये हो गया जी कंप्लीट. ओके, द मीन ऑफ 5 numbers is 7. The numbers are listed in order of size, starting with the smallest, and the three smallest numbers are equal. So it means that there are 5 numbers: 1, 2, 3, 4, 5. Okay, now they say that the three smallest numbers are equal. It means that if three smallest numbers are x, the middle three numbers add to 35. Okay, so it means that middle three, 1, 2, 3. For example, if this is y, so I can say that x plus y is equals to 35. Okay, the largest number is 4 times the smallest number. The smallest number is 4x, so that would be 4x. Yes or no? Yes or no? List the 5 numbers in order of size. And we have one more condition, and that this is the middle three number add to the mean of 5 numbers. So it means that x plus x plus y plus 4x divided by 5, it is equals to 17. Agree everybody? बेटा आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं? जहां पे समझ ना आए तो पूछ लिया करें. Should I repeat this question? Yes, sir. Okay,
मुर्तजा आप आपको तो मैं एक चीज पढ़ने में हूर नूर और बरीरा से मुखातिब हो. हूर एंड नूर, do you understand this part? Yes, sir. Okay. Okay. So we have one this equation that 2x plus y is equals to 35. This is my equation number one. Okay. And we have this equation as well. That mean of these five numbers, this is equal to 17. So 5 will go there, it will be multiplied. So 3x plus 4x is 7x plus y is equals to 17 into 5 is what? It is 85. So we have got this equation number 2. So let me write this equation number 1 below that. So 2x plus y is equals to 35. Now do subtraction. Subtraction कर लें तो signs will change. We know this already. Cancel. Plus minus is minus. So 7 minus 2 is 5x. 85 minus 35 is 85 minus 35 is 50. Divide by 5 on both sides. So x. So x is equals to 10. So it means that this is 10, this is 10, that is 10. This is 4 times of 10, that is 40. So 10 plus 10, 20, 20 plus what is 35? So that would be what? 15. So these are the three numbers, five numbers which have the same. So according to the question, the mean number, I'm repeating the question, please pay attention. The mean of five numbers is 17. पांच नंबर है, पांच नंबर का जो एवरेज है वो 17 आता है. ओके. हमें सेकंड लाइन पे पता लगा द नंबर्स आर लिस्टेड इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट. तो आपने ऐसे लिखना है कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर. द थ्री स्मॉलेस्ट नंबर्स आर इक्वल्स. दैट इज द रीजन मैंने इन तीनों को एक्स लिख दिया. एग्री एवरीबॉडी? यस और नो? यस और नो? ओके. द मिडिल थ्री नंबर्स हैं ये वाले आपके पास. मुर्तजा फोकस करें. उन्होंने कहा कि इसका सम करो तो 35 आता है. तो तीसरा नंबर y होगा क्योंकि वो x हो नहीं सकता. तो मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 35. एक इक्वेशन मैंने ये बना ली. एग्री? और एक इक्वेशन मैंने क्वेश्चन से बनाई थी. मीन ऑफ फाइव नंबर्स इज 17. एग्री? क्योंकि लास्ट में उन्होंने कहा है कि दैट द लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द स्मॉलेस्ट. एज स्मॉलेस्ट इज x, so the largest would be 4x. Is this clear? जी सर. समझ आ गई सबको? अब देख लीजिए जरा, ये जो नंबर हमने नीचे निकाले हैं 10 प्लस 15 35 आ रहा है. ठीक है. ओके. 10 प्लस 10 30. 30 प्लस 15 इज व्हाट? 30 plus 15 is 45. 45 plus 40 is 85. 85 डिवाइड बाय 5 करो तब वो 17 भी आ रहा है. ठीक है. इसका मतलब हमने क्वेश्चन ठीक किया है. इज दिस क्लियर? ओके. नाउ दे से दैट find the acceleration during the first 20 seconds. So first of all, wait a minute, ये बहुत आगे चले गए हम लोग. So acceleration in first 20 seconds. So this is the point. So it means that मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, that is gradient. तो rise by run. So acceleration is equals to rise by run. So rise is, we can see that it's 15 and the run is 20 seconds. So 15 divided by 20 is 3 by 4 or 0.75. 0.75 meter per second square. Okay. Describe the motion of the cycling between T20 and T30. So we can see that it's a straight line and the A speed is constant speed. constant. It's a constant speed. Okay, the speed is not changing. It's a constant speed. Okay. So find a total distance traveled in 50 seconds. So area under the graph. Area under the graph is the answer. So we can see that we have triangles. We have this thing as well. So look at this. Area under the graph is what? So we have to find out the area under the graph. This is a triangle. So area is equals to 1 by 2 base into height. So that portion is 20 and this portion is 15. So 10 times 15 is 150. So it means that this is 150. Now it's time to
to find out this one. It's a trapezium. Area is equals to 1 by 2 into L1 is 10 and L2 is 10, 20, 30. 10 into 30, and the height of the trapezium is 15. No, it's not a trapezium right now. Wait a minute. Because 1, 2, 3, 4, we have 5 sides, so we have to distribute it. बरीरा बेटा, ये चीज जरा समझ डालने बेटा कि यहाँ पर ये ट्रेपीजियम यहाँ तक बन रहा है, ठीक है? ये नीचे रेक्टेंगल है फिर, ठीक है? Yes, sir. तो आप इसको कोई भी शेप बना सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है? आप इसको जो भी शेप बनाना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। आपको ये नजर आ रहा है कि ये आपका L1 हो गया और ये आपका L2 हो गया। तो L1 प्लस L2 होता है। तो ये फॉर्मूला मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ इधर। एरिया इज इक्वल्स टू 1 by 2 into L1. L1 is 10 plus L2 is 10, 20, 30, and the height of the trapezium is this place, that is 5 to 10, 10. So A is equals to 1 by 2 into 40 into 10. So A is equals to 1 0 2 to 5 0 10, so 200. So that portion is 200 and the lower part is a rectangle. We can see that it is 5, ये 5 है, and that portion is 10, 20, 30. So 5 into 30 is 150. So add these three areas, 150 plus 150 plus 200. So 150 plus 150 plus 200, so that is 500. 500 meter is the distance. Okay, Ramsha, can you hear me? मुर्तजा एंड उष्णा, बेटा जरा देखें यहाँ पे, यही Yes, क्वेश्चन sir. हम लोगों ने उस दिन किए थे, ठीक है? ये भी मैंने सॉल्व किया, इसकी समझ आ गई। Okay, during 1 year, the value of the bicycle decreased from 200 to 160. So 200 to 160, तो इसका मतलब है $40 decrease हुआ है. Yes or no, Ramsha? Yes. Calculate the percentage decrease. You are finding percentage decrease, right, Ramsha? So it means that you have to write decrease in front, and decrease is 40, and you have to divide by actual. So 200 is the actual, not 160, okay? And for the percentage, multiply with 100. So 0, 0 cancel. So 40 divided by 2 is 20% decrease. Yes or no? Yes, sir. Okay, जी, solve the inequality. So look at that. n को सब्जेक्ट बनाना है तो इधर लिखें जरा 2n plus 23 अरेंज कर रहा हूं मैं जरा क्वेश्चन -6n plus 5, ठीक है जी? -6n को आप इधर ले आए, लेफ्ट पे ले आए। 2n plus 6n is greater than 5 minus 23, ठीक है जी? इक्वल की तरह ही ट्रीट करना है, लेकिन कोशिश करनी है कि जो भी अल्फाबेट हो उसको हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी है, नेगेटिव ना रखें। अगर आपको नेगेटिव रखेंगे तो सब्जेक्ट मेकिंग करते वक्त आपको इनइक्वालिटी को फ्लिप करना पड़ेगा। कैसे, किसी क्वेश्चन में समझाऊंगा वो भी। 2n plus 6n is 8n. 5 minus 23 is minus 18. Is this clear? Now divide by 8 on both sides. So n is cancelled. So n is greater than minus 9 by 4. Minus 9 by 4. So that is your final answer. It's paper 1. No need to split the question in the fractions. Okay, factorize means make it simple. Make it simple. Make it simple. So look at that. Do we have something common? So check. We have y as common, agree? So 3x minus q. Okay, now look at these two. What is common? We can see 2 is common and p is also common. So let me take plus 2p as a common. So 3x, okay, minus 2 is already out and p is out, so minus q. Okay, now we can see that the bracket is common, right, Noor? So right bracket is a common and the leftovers are y plus 2p, right, Noor? Yes, sir. Okay, so this is your final answer, that 3x minus q and y plus 2p. But you have to complete this paper in your past paper, okay? With my help, and you have to complete one more paper by your own. Okay, the diagram shows a shaded region, and the equation of the line AC is given. That equation of the line AC is y is equals to negative 1 by 2x plus 5
Write down the three inequalities. We can see that three inequalities means three lines. So Barira, we know that this is one line. Yes or no? Barira, Yes, sir. this is one of the line. Agree? And this shaded region is on the right side. So I can say that the equation of the line is x is greater than equals to what? Minus 4. Very good. Good job. Okay, the second line is this one, and it's a horizontal line. And so y is greater than equals to 2. Y is greater than equals to 2. And the third inequality is already given. Third line is given, and that part is below the line. So y is less than equals to minus 1 by 2 x plus 5. So these are the 3 marks for the question. Is this clear? 2 marks. Okay, Sir, so जी बेटा sir, अगर ऊपर वो थर्ड लाइन गिवन ना होती वो हम कैसे फाइंड करते? बेटा आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने सिखाया है ना y is equals to mx plus c से निकालते हैं ना हम लोग. ओके सर. आपको c नजर आ रहा है ना कि 5 लिखा हुआ है कि नहीं? आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे भी 5 लिखा हुआ है. और इस लाइन का ग्रेडियंट निकालना कोई इतना बड़ा काम नहीं है. राइज बाय रन से निकालेंगे ना हम लोग. Okay, look at the diagram. We can see that radius and tangent they make 90. So this angle is 90. So 90 minus 36 is this angle, which is 54. If this is 54, so that would be the half. So x is equals to 54 divided by 2, which is 27. Right? Everybody? Geometrical properties of circles में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है. Is this clear, everybody? जी Yes, सर. sir. Okay. Look at this matrices. Matrices में inverse निकालना है. So inverse of the matrix is equals to 1 by determinant of A multiply with adjoint of A. So A is equals to determinant कहते हैं बेटा cross multiplication को, like that. So 3 times 2, oh sorry, wait a minute, 1 तो लिखा ही नहीं मैंने. 1 divided by, so 3 times 2 minus 2 into 1. So minus 2 into 1. Adjoint is you have to change the places of these two numbers and the sign of these two numbers. So places are 2 and 3 and signs are plus 2 and that would be minus 1. So 1 divided by 3 2s are 6, minus minus plus 2 ones are 2. Adjoint 2, 2 minus 1, 3. Okay, that would be 1 by 8. So 1 by 8 multiply with 2 minus 1, 2 and 3. So we can see that we have a matrix available. Write 1 by 8 outside and 2 minus 1, 2 and 3 outside. Is this clear, everybody? Is this clear, everybody? Yes sir. Sir. Okay. Noor, focus. The diagram shows a cumulative frequency diagram with 120 mass of 120 eggs. Okay, a median is 50% half. So 50% of 120 is 60th value, right, Noor? Yes, sir. So 60th value, you have to hit the curve, and go down like that. So it is 58. It is 58. Yes or no? So interquartile range is IQ is equals to upper quartile minus lower quartile. Upper quartile is 75% of 60, which is 45th value. So 45th value would be this is 50 and this is 45th value. Hit it, go back down, and that is 55. So upper quartile is 55. Now it's time for the lower quartile. So lower quartile is 25%. Lower quartile is 25% of 120, which is 30th value. So 30th value, so you have to hit the curve and like go back down. It is 51. 55 minus 51 is 4 gram is the answer. Is this clear? Is this clear, everybody? Yes, sir. Sure? Yes. Okay. So eggs are described as large if the mass is 63 gram or more. Okay, 63 gram or more. So this is the mass. And 63 is somewhere here. So we have to raise a line and hit the curve.
Hit it. Okay, so that point is my point. Okay, done. So that point, that number is, this is 90, 92, 94, 96, that is 98. So these eggs are large eggs. So 180 minus 120 minus 98 is 12 eggs. Is this clear, everybody? Is this clear? अब ये देख लीजिए जरा, रमशा एंड मुर्तजा एंड ओशना, बेटा आपको भी समझ आएगी. सॉल्व 27 पावर k इज इक्वल टू 9. अब बेसिस आर सेम, पावर इक्वल होना चाहिए. अब 9 का जो स्क्वायर है वो होता ही 81 है, लेकिन 3 स्क्वायर इज 9 एंड 3 क्यूब इज 27. एग्री? So can I change 27 with 3 cube and 9 with 3 square? Yes, sir. Yes or no? Yes. Yes. Okay, Noor and Hoor, Barira, Yes, sir. ये Yes, सब sir. एक्टिव बैठे हैं. Good. So power के ऊपर power, whenever we have double power, we have to multiply it. So 3 power 3 k is equals to 3 square. When bases are same, there is equals to, which means that powers are equals. So 3k is equals to 2. 3k is equals to 2 to divide by 3 on both sides. So k is equals to 2 by 3. Is this clear? Yes. Now it's also indices, simplify. 16 power minus 1 by 4 and x power 8 whole power minus 1 by 4. Please flip the question so the question is positive. Flip the question. So x power 8 whole power 1 by 4 and 16 power 1 by 4. You can see that the question is flipped. Yes or no? We can flip it to make it positive. 4 ones are 4, 4 twos are 8. In the numerator, I have x square. In the denominator, I know that 2 power 4 is equals to 16. Agree or not? Yes or no? Yes. Can I Yes, cancel 4 with the 4? So it means that x square divided by 2 is the final answer, simplified answer. So x square divided by 2 is the final answer. Right, Ramsha? Yes. मेरा बेटा इसको जरा पेपर 1 में प्रैक्टिस करना. अच्छा, Okay. स्पेशली जो टॉपिक हमने क्लास में पढ़े हैं. Okay, y is inversely proportional to x plus 1 whole square. Y is inversely proportional to x plus 1 whole square. So now we know that equals k divided by x plus 1 whole square. Proportionality, sign of proportionality, this k is the proportionality constant. Put x is equals to 1 and y is equals to 5. So y is equals to 5 and x is equals to 1. So k divided by 2 square, 2 square is 4 and k is equals to 5 4s are 20. Okay, we got the value of k. Now find y when x is equals to 9. So y is equals to 20 divided by x plus 1 whole square, because k is 20. So y is equals to 20 divided by 9 plus 1 whole square. Y is equals to 20 divided by 10 square is 100. So y is equals to 1 by 5. Is this clear, everybody? ऑनलाइन स्टूडेंट्स नूर हूर एंड बरीरा, बेटा ये सब चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो राजा इट्स अ रिवीजन. सो Yes, काइंडली sir. प्लीज पे अटेंशन. ठीक है? एवरी संडे मैं रिवीजन करवाऊंगा, मंडे ट्यूसडे और सॉरी फ्राइडे एंड सैटरडे, क्योंकि कमिंग फ्राइडे सैटरडे को मैं आपको मैंने वेक्टर्स करवाना है. उससे नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे को मैंने आपको कराना है लोकस, और आपका कोर्स खत्म. ठीक है? फिर मैं नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में हम लोग सिर्फ आपके क्वेश्चंस लेंगे जो आपको नहीं आते होंगे. ओके, f of x, f of 3 means put x is equals to 3. So f3 is equals to 2 into 3 square. रमशा देखो, अब ये क्वेश्चन आया है पेपर में और कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. ठीक है? तो टेबल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके बेटा, 3 square is 9 and 9 twos are 18 plus 7 threes are 21 plus 4. So एडिशन ही है तो स्ट्रेट अवे ऐड कर दो. 18 plus 21 is 29. 39 39 plus 4 is 39 plus 4 43. is 43. 43. Thanks bacha, 1 mark for that. Now inverse, g inverse. So first of all we know that let g of x is equals to y. So y is equals to 2x plus 6. Make x the subject. X को subject बनाएं, so it would be y minus 6 divided by 2
is equals to x. Done. नूर समझ आई मैंने जो डायरेक्ट किया है? Yes, sir. Noor? Okay, the third step is make x the subject. Okay, the third step is replace x with y. So x minus 6 divided by 2 is equals to y, and this is your final answer, that this is the inverse function of that. रमशा, आपको फंक्शंस आते हैं? वैसे स्कूल में पढ़ाए थे कि नहीं? आते हैं ये वाले। सर मुझे भी ठीक आते है, थे रिवाइज लेकिन भूल करा। गए। हाँ थोड़े अभी आ पीछे रहे हैं है। कि नहीं? नहीं सर भूल गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। f of x माइनस g of x, तो f of x की वैल्यू लिखी है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, माइनस g of x का मतलब है कि माइनस टू एक्स प्लस 6 ऐसे होगा, इज इक्वल टू 1। एग्री? तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 1। अरेंज कर लें, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x प्लस 4 माइनस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू, मैं माइनस 1 प्लस 1 को यहाँ पे ले आया हूँ, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 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 टू माइनस 1 इज माइनस 3, डायरेक्ट कर लिया। अच्छा, इज इक्वल टू 0। अब आपको मिड टर्म ब्रेक से करना चाहते हैं कर लें, पेपर 1 है क्योंकि आप कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। सो फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करें, 2 3 6, 6 के फैक्टर्स बनाओ, 1 और 6 और 2 और 3, और 2 और 3 पिक कर सकते हैं बिकॉज 2 प्लस 3 इज 5, राइट बरीरा? यस सो सर। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस व्हाट माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लेकिन अब एक प्रॉब्लम ये है कि मैं इन दोनों फैक्टर्स को यूज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा, लेकिन प्लस माइनस पे नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? देख लो जरा, माइनस 2x माइनस 3x आ रहा है मेरे पास माइनस 5x, लेकिन अगर बड़े का साइन में चेंज करूं तो मेरे पास आएगा x, समझ आई? तो ये फैक्टर नहीं उठा सकता, हमारे पास दूसरा फैक्टर है और वो है 1 और 6। 6 में से 1 भी निकालो तो 5 आता है। सो माइनस 1x माइनस 6x, तो बड़े का साइन प्लस कर दें तो अब ये ठीक हो गया। कॉमन निकाल लें, x इज कॉमन तो अंदर आ जाएगा 2x माइनस 1, और यहाँ पे आ गया कॉमन प्लस 3 तो अंदर आ गया 2x माइनस 1। सो ब्रैकेट इज कॉमन, 2x माइनस 1 एंड x प्लस 3 इक्वल 0। लाइन लगा लें, 2x minus 1 is equals to 0, x is equals to minus 1 by 2, okay, and x plus 3 is equals to 0 and x is equals to minus 3। समझ आ गई मेरा बेटा? चलें जी, बस मेरी बस हो गई है, मैं बहुत बोल बोल के मेरा पूरा गला खुश्क हो चुका है। सो लास्ट क्वेश्चन जो है वो सेट्स पे रहता है, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सैटरडे फिर एक नया पेपर होगा, पेपर 2 कराऊंगा नेक्स्ट सैटरडे संडे, तो काइंडली आप लोगों ने ये पूरा पेपर कंप्लीट करना है और क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग खुद करके मुझे भिजवा दें, ठीक है। इज दिस सर क्लियर? सर ये पेपर कंप्लीट करके हम आपको सेंड कर दें? बेटा सेंड नहीं, आप मुझे क्लास में दिखा देना कल, आप तो मंडे को मेरे साथ क्लास में होगे ना, ठीक है। जी सर, ऑनलाइन, लेकिन आईपैड पे ऑनलाइन कर दें। स्टूडेंट्स, हाँ आप मुझे सेंड कर दें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ओके मैं सर, लिख देता ओके। हूँ, अगर आईपैड से सेंड करना हो तो ये देखो, ये मेरी है ईमेल आईडी अब्दुल बासित OFF@gmail.com, ये मेरी ईमेल आईडी है gmail.com। व्हाट्सएप में नंबर मेरा आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, तो ये मेरी ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये पेपर मैं इंशाल्लाह ताला मैं भी ठीक आप है सर। लोगों को भिजवा भी रहा हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को भिजवा रहा हूँ, अच्छा, ये पेपर। चलो मेरा बेटा जाओ, टेक केयर, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज सर।